Hello, good evening, sir. Evening, Arshiya. How are you? Absolutely fine, sir. How are you? I'm good. I'm good. Thank you. And finally, है ना कितना डिले के बाद बहुत टाइम से बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन डिले हो के फाइनली हाँ नहीं नहीं तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन है ना यस सर चलिए तो अर्शिया लाइक दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं मुझसे भी पूछते हैं और वो मैं आपकी और लेट्स से आपसे वो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा ताकि उन्हें एक और क्रेडिबल सोर्स से एक अच्छे आंसर्स इसके ऊपर मिल पाए है ना राइट तो सर एक तो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहली चीज तो यही है कि देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता है लाइक टेंथ और ट्वेल्थ में उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर स्कोरिंग अराउंड 60-70% एंड कॉलेज में भी कुछ इतना ज्यादा टॉपर नहीं रहे हैं राइट सर लेकिन वो सिविल सर्विसेज की और अट्रैक्टेड तो है लेकिन यस प्रिपरेशन करने से डरते हैं कि सर हम कॉलेज और स्कूल में अच्छा प्रिपेयर मतलब स्कोर नहीं कर पा राइट सर सो वो उनको एक डर है कि विल दे बी एबल टू क्लियर द एग्जाम और नॉट तो मतलब आपका क्या टेक है शुड दे बी फेयरफुल विद दिस और दे शुड गो अहेड एंड प्रिपेयर Not at all, sir. Because like personally also, and I know a lot of people also, jinka like even during my college time, I was not like apne batch mein kabhi bhi like even in the top 20, 30 children. Like I scored decent marks, but I was never like the topper of the batch or something. And uske baad school mein bhi like I was good in studies, but especially after 11th, 12th, I took non-medical, which I did not really like. So even a lot of people who have gotten into this field, they would be able to relate ki बिकॉज मेरी इंजीनियरिंग का ना कहीं यूज हुआ ना मेरी प्रेपरेशन में यूज हुआ सो इट वाज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस बट वही दैट अब इफ वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस कि अच्छा इंजीनियरिंग के टाइम आई डिड समथिंग रॉन्ग आई शुड हैव डन समथिंग एल्स तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह when you know that you can do it and when you have that zeal and determination sir I feel there's nothing to be fearful about. okay the past should not haunt you Absolutely not sir. so I think that's a relief to a lot of students of Yeah. and okay great so Arshiya the second question is Yes कि sir. this exam is a very long exam let's in terms of preparation we are talking about right Yes. there are 9 journal study subjects be it the Yes UPSC sir. or the state services so Absolutely. preparation के अंदर ही around 10 to 12 months you require for preparing the Yeah. exam an exam itself is of 10 to 12 months सो ये Yes, sir. बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन बैटल की तरह हो जाता है तो इतनी Yes, देर sir. के लिए लाइक हाउ लाइक द मोटिवेशन लेवल्स गो डाउन राइट ड्यूरिंग द Absolutely. प्रिपरेशन सो Yes, sir. हाउ यू वर एबल टू मेंटेन योर मोटिवेशन लेवल्स एंड व्हाट कैन यू एडवाइज द स्टूडेंट्स हाउ टू बी मोटिवेटेड इन द प्रिपरेशन So firstly, I feel like if you keep testing yourself, that like it really helped me with motivation personally. Like I would test myself, and if I would feel like okay, थोड़े marks इस subject में कम आ रहे हैं, yeah, I could do better. So that would always be a motivating factor for me. And like so that is why I would always advise that whenever you finish a subject, whenever you finish a topic, test yourself over it so that you know आपकी preparation ठीक direction में जा भी रही है. Like so that really helps with motivation. And sir, like कभी थोड़े demotivate हो गए और कभी ऐसे होता है that you don't feel like making notes या you don't feel like sitting, तो उस time में I would use YouTube as another medium to study. So like there are videos, so जैसे आप you also post videos, and so जैसे notes maybe there are different types of notes. So like you used to make us those flow charts, and वो छोटे उसमें like a gist of every topic. तो जब कभी ज्यादा intense कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता था कि बहुत अगर in depth नहीं पढ़ना, तो वो just जल्दी जल्दी से पढ़ के कि जल्दी से टॉपिक ऊपर ऊपर से रिवाइज भी हो गया पूरे नोट्स में अंदर जाने से. एंड either I would use YouTube to like जब थोड़ा सा वैसा वाला फेज आ जाता है, and then like in a couple of days come back to your normal timetable. And yes, making a timetable also keeps you motivated. ओके Like if you divided your time कि हाँ इस टाइम मैंने पढ़ना ही है, no matter what इस टाइम मैंने पढ़ना ही है, तो फिर that really helps with keeping that cycle going. अच्छा और इसके अंदर एक बहुत छोटा सा डाउट है लेकिन ये काफी आता है इज इट Yes. नेसेसरी टू स्टडी ऑन टेबल एंड चेयर और यू कैन स्टडी एनी वे यू लाइक No, sir, a lot of people, like I also have spoken about it बहुत ज़्यादा with a lot of friends of mine, because a lot of people tell me कि हम तो table chair पे पढ़ते हैं. मैंने अपनी सारी preparation, sir,
I used to sit on my bed. I've studied all my books, all my notes. I've studied like this. So even like when we used to be in Chanakya, उस time की भी से बात करें तो मैं वहाँ पे table chair पे बैठती थी. फिर घर आके I would still sit on my bed and revise those same notes. तो I don't feel like this matters. थोड़ा वो होता है कि हाँ जी alertness and all. But I feel like wherever you feel most comfortable, बिकॉज इट्स अगर मेरे को बार बार लाइक बैक स्ट्रेन कर रही है या कुछ हो रहा है तो आई फील लाइक दिस इज एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक शिमला इट्स वेरी कोल्ड तो मेरे को ऐसे होता था कि कंफर्टेबली आई वुड टेक माय क्विल्ट इन आई थिंक वो कॉलेज में आदत पड़ जाती है ना हॉस्टल में यस सर एंड एवरीबडी लाइक कि नींद नहीं आती बट मेरे को ऑनेस्टली नहीं आती थी मेरे को आई वुड सिट एंड स्टडी तो मेरे को नींद वाला वो जब सोना है उस टाइम टेक योर टाइम ऑफ इन स्लीप बट आई थिंक मेरा भी यही आंसर रहता है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है लाइक जिससे भी आप एफिशिएंटली वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पढ़ना जरूरी है राइट एग्जैक्टली आप बीन बैग पे भी पढ़ रहे हो अगर आपके यहाँ निकल रहा है वो वैसा आउटपुट जितना आपको चाहिए तो फिर व्हाट्स द हार्म No, great. And see, Arshiya, you said about testing yourself. So, ये जो mocks होते हैं ज्यादातर आप self analyze ही करते हो. Like, you generally don't get कि कोई आपको वो check करके बता दे कि okay, you're scoring 60 marks, 70 marks is fine. तो ये self analysis के अंदर भी student को लगता है कि I think कि चलो मेरे 60-70% I am scoring in the mocks. So, is self analysis that important या आपको कोई हमेशा external support ही चाहिए वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्योंकि कॉलेज और स्कूल में आदत पड़ जाती है ना रेगुलर टेस्ट की एमएस की राइट सर वो वाली चीज सर इसमें आई फील लाइक बिकॉज तैयारी आप अपने हिसाब से कर सकते हो बट यू डोंट नो लाइक उसके लिए आपको आई फील यू नीड एक्सटर्नल हेल्प यू नीड समबडी हु विल टेस्ट यू हु विल टेल यू कि इसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं बिकॉज सर अगर मैं खुद कोई टेस्ट लिख रही हूँ and I'm marking myself I don't really know do I actually deserve the marks that I'm giving myself तो जो somebody who's professionally looking after all this अगर कोई institute है you have a teacher तो that really helps because वो 50 और papers देख रहे हैं per day तो they know how to compare तो उनको ये ज्यादा knowledge है they'll be able to tell you all this better so testing में I really feel an external help is very essential. Absolutely correct. वैसे तो अर्षा आपने इस आंसर लाइक इस क्वेश्चन में वो चीज का आंसर किया था बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज नोट मेकिंग लाइक नोट्स इन दिस एग्जाम जो भी रहता है very sir I would really say very because especially when you have to like come back to a subject आपने बुक से अगर आप करो तो आई फील लाइक ऑफ कोर्स यू अंडरलाइन एंड एवरीथिंग बट नोट्स यू मेड इट अपने आप आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस टाइम बनाए थे जैसे हम भी सर आपकी क्लास में व्हेन वी यूज्ड टू मेक नोट्स तो हमें पता होता था कि आपने जब ये पूरा पेज लिखाया था तो आपने क्या क्या साथ में बोला था बिकॉज वीव रिटन दैट डाउन वीव मेड वो ऑल ऑफ दोज बॉक्सेस एंड वीव रिटन एवरीथिंग डाउन वीव मेड ऑल द पॉइंट्स तो अब हमें जब व्हेन वी गो बैक एंड वी रिवाइज इट इट बिकम्स ईजियर and when you even in the future like 5 months later या a year later when you are revising the same notes अगर आपने घर आके उसको एक दो बार भी रिवाइज करा है because you've made them तो वो बहुत easy to relate हो जाते हैं because you made it according to yes I guess वो टाइम बचाता है आपका दोबारा absolutely yes sir perfect and the next question is Arshiya कि how important is right mentorship in this exam because it is very easy like 12 months preparation and college के suddenly बाद आपको वो थोड़ी सी independence की भी आदत होती है so it's very easy I have also seen lot of students and you must also have known lot of friends and anything जो बहुत आसानी से deviate हो जाते हैं इस बात से क्योंकि again self analysis और बहुत ज्यादा time है तो आपके अकॉर्डिंग how important is right mentorship in this exam especially civil service sir I feel it is really important because जैसे I had joined an institute तो even if like अगर आप शाम को जाके उतनी अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते आप बस उतना भी अगर पढ़ लो जो आपको रोज इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं यू स्टे फोकस्ड आपका एक सब्जेक्ट चला हुआ है तो यू आर डूइंग दैट सब्जेक्ट एवरी डे तो एक वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट वैसे ही चलता रहता है बट अगर मेंटरशिप नहीं है तो यू विल बी लाइक आपने आज सपोज 3 दिन आपने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ ली तो फोर्थ डे लाइक चलो ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज नोबडी इज देयर टू लाइक कीप अ चेक नोबडी इज देयर टू कीप यू ऑन ट्रैक कि अच्छा अब आज आपने ये करना है कल आपने ये करना है कोई इंस्टीट्यूट हो आप कहीं से थोड़ा सा वो ले रहे हो या तो यू वेरी
like amazingly determined, जो हम्म, कि I don't think it is there हाँ in not that. 99.99% of the people. तो वो सर बहुत कम लोगों में होता है जो बिना किसी उसके, बट अदरवाइज आई फील इट रियली हेल्प्स ओवरऑल कि आपको एक ट्रैक पे रखेगा, आपको पता है कि आपका सिलेबस उस टाइम पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी टेंड टू ओवर एस्टिमेट आवरसेल्व्स कि हाँ हम इतने से टाइम में ये कर लेंगे, हमें उतना आइडिया नहीं लगता, but this I feel mentorship really helps. It helps. Okay. Yes. And see, Arshiya, how, like, there are two school of thoughts here. I think I was talking earlier also is cheese pay. Ki, like, Yes. how easy to first prepare for UPSC and then appear for state services Right, because you sir. have done both, and or you should only focus on state services. Like for those students who think कि नहीं हमें HSC करना है या हरियाणा वाला ही करना है या Right, sir. UPSC करना है, तो आई थिंक दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक तो कहते हैं कि आप खाली स्टेट का ही प्रिपेयर करो, हाँ and जी. you, I know you prepared for UPSC and then you appeared Yes, for sir. state services. So Yes, what sir. do you see, like how easy it is for you to make the transition, or the other way around is fine? So the thing is that there's like people don't understand the kind of difference that is there between these two exams. Right. So like UPSC helps with your answer writing when you prepare for UPSC, because there's such a deep understanding of every topic when you prepare for UPSC that it will really supplement your answers, and out of the entire crowd who's just preparing for the state services, your answers will outshine others. That really helps. But there people need to be clear कि क्या UPSC वाला ही part है, like this is just UPSC and this is just state, and you have to divide your time for both. You can't just prepare for UPSC and study एक दो states की book and think कि हो जाएगा, because it's very different. UPSC is understanding, state में like HS में it's more of facts, like हिमाचल वाले उसमें like उसमें बजट का ओवरऑल वो पूछेंगे, यूपीएससी में द जिस्ट ऑफ इट, व्हाट डिड डू यू कंक्लूड, इसमें पूछेंगे व्हाट वाज द ग्रोथ रेट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो दोनों डिफरेंसेस फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग. If they are able to distinguish between the two, if they are able to give their time, allot their time to both the things individually, you can easily prepare for both. Like वो आपको हेल्प ही करेगा. बस एक एथिक्स है जो स्टेट वाले एग्जाम में नहीं है. बाकी ऑलमोस्ट द एंटायर पेपर, इवन योर ऑप्शनल की प्रेपरेशन फॉर यूपीएससी विल इंक्रीज योर मार्क्स इन द स्टेट सर्विसेज लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज ऑब्वियसली द यूपीएससी वाली प्रेपरेशन इज वेरी वो. बट इसमें स्पेशली फॉर द पीपल जिनका थोड़ा ज्यादा फोकस स्टेट सर्विसेज के लिए, they should like read the syllabus plenty of times to know exactly hai kya. Just go through the syllabus line by line multiple times so that you know what the difference is. This is a HS में ancient or medieval history नहीं आती. Okay. Like all it's next to zero. So where पहले I was first attempt में I gave UPSC and HSS both, and फिर उस time मेरा 18th rank पे I got selected in HSS. But फिर next year I was like कि I'll just focus on HSS for the next attempt, कि for now I'll just focus on HSS. तो उस time फिर से मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी that I did not focus on ancient and medieval, जो कि I know UPSC में आएगा, but state में जो नहीं आ रहा है, और अगर आपको कोई attempt सिर्फ स्टेट वाला देना है, एंड सम पीपल हु आर वेरी क्लियर कि हाँ हमें सिर्फ स्टेट का देना है, तो प्रॉपर उस हिसाब से तैयारी करो, अंडरस्टैंड उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स, अ लॉट ऑफ वो उसी उस पे आता है, लाइक जो पहले आ रहा है वो उसी पैटर्न पे चलेगा. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डायनामिक्स दोनों पेपर्स के, इफ यू कैन हैंडल बोथ, 2 घंटे उसको अलग से दे दो स्टेट वाले को, एंड इफ यू कैन डू दैट आई थिंक like वो हो जाएगा, मैनेजेबल है. I think you're absolutely right. Knowing the syllabus is very important. You should know. Yes sir. No, even which subject you are studying और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका ट्रेंड वगैरह जानना जरूरी है. Like what would you personally advise? Like obviously your personal experience is like that, but hindsight में आप थोड़ा better analyze करते हैं. Yes sir. What would be personal advice? Like start with UPSC and then go for state, because as you rightly said, जो लोग यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एग्जाम में भी अपीयर होते हैं, एंड इफ दे क्लियर फ्री दे आर योर कॉम्पिटिटर्स इन मेंस एग्जाम. So your personal advice, like should a person try for both, or focus one exam at a time? So for people who are preparing for both, I would say start with UPSC,
बिकॉज वो प्रेपरेशन का लेवल आपका बहुत हो जाता है. एटलीस्ट अपना फर्स्ट ईयर यूपीएससी और स्टेट अगर दोनों भी करो, फोकस ऑन यूपीएससी थोड़ा ज्यादा. अगर आप क्लियर हो, आपको स्टेट ही देना है तो हाँ, तो फेयर इनफ, यू जस्ट अपेयर फॉर दैट एग्जाम. बट एंड अगर आपको पता है कि आपका ज्यादा इंक्लिनेशन स्टेट की उसमें है, तो हाँ, ज्यादा प्रेपरेशन स्टेट की करो. बट अदरवाइज, to get a better understanding of subjects, of answer writing, of concepts, even of things like current affairs. So state उसमें current affairs are just one liners. ये award किसको मिला, like वो काफी ऐसा होता है. And UPSC में you link it with the static part, you link it with history, you link it with everything. So once you've understood this pattern, getting into the state becomes very easy. Okay. Yes. Fair enough. Great. And Siyasha, like last two questions. One is like, what are the main things that you think UPSC or SPSC, like your State Public Service Commission, are looking to test in this exam? Like, आपके according major चीज क्या है जो एक aspirant में ढूंढ रहे हैं, या you know? Right, sir. So एक तो a lot of people ask me this question that हमें 4-5 years हो गए हैं prepare करते when we're not doing anything. So will that matter in our interview? So absolutely not. They're looking for persistence and they're looking for honesty. The people who are sitting there, sir, वो like no matter how much we try to act like we'll bluff them या फिर उनको नहीं पता, they see right through it. Like उनको है, they've been sitting on those chairs for like decades now and they've seen thousands of people like us, तो उनको है वो idea. So like try staying honest and that really helps because they see through it. In your like overall in your approach in life, what they look for is a positive approach. Nobody likes a person who is like, पता नहीं हो पाएगा. अच्छा, right, so we can try but I don't know, I'm not sure about this interview, I don't know how it will, like थोड़ा सा वो आपके बोलने में, like it shows in everything. So they're looking for a positive attitude and your positive approach in life. Like I feel these are the couple of things जो उनको काफी ज्यादा चाहिए. बाकी obviously everybody is studying, everybody has knowledge, but how well you put that knowledge to use, like when they ask you in a practical situation, आप कितनी अच्छे से are you able to correlate the two. वो आपके essay writing में भी they look for those things. Are you able to correlate your knowledge and like the things going around you. So this is what I feel they look for. Absolutely right. Absolutely right. And see, Ashiya, lastly here before we wind up the session, like आपके experience से या आपके friends के experience से, आपने जो भी like देखा है, experience किया है, आपको क्या लगता है what are the common mistakes जो journally aspirants करते हैं, या शायद आपने भी करी हो अपनी preparation में, and what would you advise the students that how do they avoid that, like कुछ चीजों से, like वो हम कहते हैं ना, एक तो गोल है आपका आईएएस बनना या स्टेट क्रैक करना, एक है कुछ एंटी गोल्स की इन चीजों से दूर भी रहना है. हाँ जी, हाँ जी, absolutely. Common mistakes and what they should avoid in the preparation. Yes sir. So एक तो some people when they start preparing, उनका first वो होता है that let's just watch news. So be very clear on what you watch. Like news is not what you see. So like avoid watching all of those things. So like get into a newspaper as soon as you can. And sir, not revising on a daily basis, whatever you do throughout the day. So because I feel मैंने खुद ये चीज initially की थी, like I would pile things up कि ठीक है कर लिया इसको, month end में I'll do it, and वो फिर काफी it's like studying it all over again. Like if you're not revising it regularly, अगर आप 2 महीने बाद उस चीज को पढ़ोगे तो it's like studying it for the first time. Like almost 5 to 10% उसका retain हुआ होता है. So at the end of every day, make sure like don't leave your revision for the like last day, and don't avoid test series. Some people also avoid it due to lack of confidence. कि हाँ अगर उसमें कम मार्क्स आए तो हम थोड़े डिमोटिवेट हो जाएंगे, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो ये वो करते हैं कि नहीं एंड में देख लेंगे, अभी तैयारी कर लेते हैं, अगर कम मार्क्स आए तो ऐसे. कम मार्क्स भी आए तो एटलीस्ट पता लगेगा गलती कितनी हो रही है, यू नो आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए. For some people attempting 90 plus is very suitable, for some people 85 to 90 is the bracket. Like so for understanding that and how to attempt the paper, उसके लिए जितना भी you can attempt, like the more you can give it, and don't keep 200 mentors. Like
हर किसी से कोई एस्पिरेंट भी है उससे भी आप कुछ पूछ रहे हो, फिर उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और शाम को आके आप उस बुक से पढ़ रहे हो, कल आप किसी और टीचर से मिले, परसों आप किसी जिसने पहले एग्जाम क्रैक किया आप उससे मिले, yes, एंड यू yes, जस्ट yes. टेकिंग वो टिप्स फ्रॉम एवरीबडी, और लाइक हैव अ प्लान, लिसन टू समथिंग दैट यू फाइंड गुड, अगर कुछ यूजफुल लग रहा है टेक इट, बट अब हर दूसरे दिन यू कैन नॉट चेंज योर इंटायर स्टडी प्लान बिकॉज somebody told you to, because it worked for them. तो like understand what works for you. सबका बहुत different studying pattern होता है. Some people can understand geography better with maps, like उनका थोड़ा वैसी learning, तो for that like understand where you stand, आपके क्या strong points है, आपकी क्या weaknesses हैं. Like CSAT was a good point for me, मेरे को आता था, तो उसपे मत इतना ज्यादा time invest करो if that's a stronghold. So like don't every time you give a prelims GS paper you don't have to give a CSAT paper, but उसके लिए you have to give एक दो exams to know where you stand. तो फिर वही कि overall so these things. No, absolutely correct. And Acha, what change do you see, like selection se pehle and selection ke baad you meet lot of people, your relatives or anyone you meet, Right, sir. really, like what change you can see in their eyes, and what see, because I know you as a person is same, right? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, अभी भी देखा है, तो लेकिन लोगों के बिहेवियर में बहुत चेंज आता है, तो what is that change that you think is generally evident that you can see? It, so it was like very prominent from the day the result came out. Like even the way people talk, like the tone and everything just Everything changes. changes. Especially अगर I go back to my village, तो वहाँ पे everybody is like हाँ कि अब she's here. Even among the relatives वो थोड़ा वो आता है. And अब जैसे कुछ हो तो अच्छा काम होगा तो आपको बोलेंगे टाइम वो वाले भी अच्छा, ये तो generally टेम्पलेट हो गया सबका अब तो, है? हाँ जी, वो तो ऑलवेज कि काम होगा तो आपको बताएगी, काम होगा तो आपको बताएंगे तो वो वाली सारी चीज लाइक अभी आई एम नॉट इवन पोस्टेड बट पीपल हैव दैट इम्प्रेशन इन माइंड कि अब आप एक बार गवर्नमेंट उसमें आ गए हो तो यार लाइक यू So कैन गेट दैट when is your posting coming up? so probably by the end of this month or the beginning Okay. of the next month. SDM. SDM. Sir, we'll be posted as AC development for a year. That is Assistant Commissioner Development, which is equivalent to a BDO. Like Okay. it's part of our training only for a year, and then from next year onwards, we'll be posted as Okay. SDM. Oh, no, Yes. that's it. And what change you have seen, like you just told among the people and all, like Yes. अगर किसी random इंसान से आप मिलते हो जिसे आप पहले नहीं मिले, and they come to know that you have cracked this exam. Yes. So what do you see in them? So people are generally like very हिमाचल में वैसे भी people are usually very warm and welcoming, but वो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है वो welcoming and warmth थोड़ी और ज्यादा increase हो जाती है and people are like ओ बहुत आप तो बहुत young age में आ गए, बहुत आगे तक जाओगे and those things are like वो बात है. हाँ, they just see the end result. हाँ, वो हाँ hard जी work हाँ वाली जी चीज तो बिल्कुल. and फिर they ask about अपने kids के लिए कि हाँ इनको इसमें भेजना चाहिए, ये भी बहुत होता है like when you meet people, तो हाँ a lot of people So ask you for are their giving career guidance now, right? yeah absolutely No, that's great. yes. That's great. And last question from my side, Arshiya, that is about me, some feedback about me, so that Oh, students, absolutely. Sir, I studied polity, economy, geography in bits and pieces, and history also in bits and pieces from you. So polity and economy, to like pura, I have all my notes, like history, abhi tak last year tak, I've studied from your notes, and you were sorry, polity I've studied entirely from your notes. Fundamental rights, all the exceptions you would make us write down alag se, like in every page that we wrote, you would always mention this is the exception, which is like UPSC ka way of asking questions. They won't ask the normal thing. So, and every topic that you would like put up, you would relate it with current events. You would relate it with previous year question papers. So, सब बहुत अच्छे से पहले ही पता लग गया था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर सॉल्व कैसे करना है. अगर आपको जैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हाउ शुड यू गो अबाउट थिंग्स. आई एम सॉरी एक सेकंड. now it's visible. यस सर कि अगर लाइक इतने मार्क्स का क्वेश्चन है
अगर ये पूछा है कितने उसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कितना आपको एक्सप्लेन करना है, वेयर यू शुड एक्सप्लेन एंड वेयर यू शुड, अगर ज्यादा आपको पता है तो जस्ट पुट इट इन पॉइंट्स, मेक अ फ्लो चार्ट, मेक अ डायग्राम टू मेक इट लुक डिफरेंट। तो वो सारी चीजें सर अदरवाइज अपने आप से ये तो पता ही नहीं था व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। वी न्यू कि हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, बट कैसे पढ़नी है, कैसे उसको रिलेट कर रहा है, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो बिल्कुल भी इनिशियली नॉलेज नहीं होता था। एंड फॉर लाइक द कपल ऑफ मंथ्स दैट आई स्पेंट लर्निंग फ्रॉम यू सर, लाइक वो बहुत it became a pretty guiding factor for me throughout my preparation journey. So अभी तक with all those notes, like उसमें मैं कुछ कुछ points add करती रहती थी अगर कुछ और update आ जाए, कुछ latest, पर otherwise those notes used to be my base, कि जब भी mains के पहले भी तैयारी करनी है तो जल्दी से I would just go about all those notes and like I would be good to go कि सब कुछ revise हो गया because everything was covered in them. नहीं, that's so nice to hear from you, Arshiya, and I am very proud to see you, preparing. अच्छा, And whenever I talk to you, वो एक feeling आती है because I've seen you work hard, right? I've seen you in the preparation phase. तो वो हमेशा एक बहुत proud feeling रहता है एक teacher के लिए भी and मेरे लिए भी, because I remember तुम answers check कराती हो, doubts पूछती हो, yes तो वो सारी चीजें comes back to me. yes And I'm pretty sure you'll be a very good administrator because See, बोलते तो like हम सबको ही हैं, पढ़ाते तो हम सबको ही हैं, लेकिन the trick is when you are a young administrator, you always try to implement what you have learned. See, जैसे yes इंडिया के बारे में कहा जाता है, there is lot of difference between what we say and what we practice, right? yes So वो yes young administrators में एक वो zeal होता है कि जो हम पढ़ के आए हैं and to actually make a change in the lives of people, and I'm pretty sure. because you also sir आपने बीच में ethics and all भी ना, you used to keep telling us about all those things, और वो आगे ना interview and all में भी it used to be so, and even answer writing, आपने like whenever you would tell this, you did not just tell कि write this as an extra point, that used to be for all the answers कि this is a concept, कि I introduce this concept in your answer, not just this point. So इतनी सारी, and I can like foresee it for your institute that like it is going to have so many achievers because of the way that you teach, and everybody there, like people will go a long way if No, they no, just no. keep learning. I'm just blessed to have good students like you, right? They're working hard and making me proud, and I'm And it's actually the very other way around, that we got like teachers like you in the initial phase of our preparation, that we got a teacher like you keep पहले से ही हमें we were set on the right track instead of like initially making mistakes and 4 5 years उसमें waste करके, like so we were blessed enough, me and Anshul from the same batch की proud. same उसमें. नहीं Arsha, I'm very proud and I congratulate you again for your success, and I hope ये session जितने aspirants देख रहे हैं उन्हें एक बहुत अच्छा message मिला है, they get motivated from this, क्योंकि जब वो एक successful aspirant से या candidate से वो चीज सुनते हैं, like normally क्या होता है नए aspirant को ये रहता है कि it's very easy or it's very tough to हाँ crack. So when absolutely they hear it from the horse's mouth, they understand कि yeah. exactly what it all takes. So I'm sure उनको बहुत beneficial रहेगा, and I'm very happy for you. And just I wish you all the best for your journey ahead. And Thank next time you are visiting Chandigarh, you are definitely coming to the Definitely, institute. sir, for sure, without a doubt. And all the very best for the institute, sir. I hope to see branches in Himachal soon. We really need institutes here. So yeah, Very soon will be there, and अगर मैं आता हूँ हिमाचल तो I'll definitely meet you, and if you come for to sure. Chandigarh, our When, मिलना है whenever ना? you come to Shimla, please let me know. Sure, sure, And sure. all the very best to all your aspirants also, sir. You guys will do great. Thank you, Arshiya, and thank you, and all the best. Thank you. Take care. Okay.